धन्यवाद। Thank you very much, Honourable Prime Minister, sir. Ladies and gentlemen, we come to the close of the inaugural session now. And I request you all to please remain in your places. Of Museums in 1977 to create and raise awareness that museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures, and more educational than museums. After all, where else can we hope to see so many pieces of actual history that tell so many stories about our ancestors? Respected and Sri Arjun Ram Meghwal ji, Srimati Meenakshi Lekhi ji, Mr. Monial Rabate, Director, Louvre, Abu Dhabi, present here, all the officers, his Independence Day address to the nation from Red Fort, spoken about Panchpran. Panchpran means the 5 resolves to make our country a developed nation by 2047. The year we are going to celebrate our 100th Prime Minister, sir, taking your vision forward and under your guidance, the Ministry of Culture is striving to promote and preserve our rich cultural heritage, both our heritage and all the delegates and all the museum organizations. Thank you. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you, Mr. Minister, sir, for your address. I now humbly request the Honourable Prime Minister to please do us the honour of unveiling. Contraption is next to me, wonder no more, as we request the Honourable Prime Minister to unveil the star element of the National Museum, a contemporary version of the bronze statuette of the dancing girl from the Sindhu Saraswati Sabhyata. Prime Minister, sir, what you're seeing is a stylized and contemporarized life-size version inspired from the dancing girl to be the official mascot of the IME 2023. You can also interpret this mascot as a modern-day Dwarpal or door guardian that ushers the audience into the experience of the takeaway and helps in preserving museum memories. It also encourages more made in India merchandise and interest in school and college students about museums, not just as a space for infotainment, but also as a place for gainful employment. The graphic novel is also employed as a unique way to throw light on the manifold educational and career opportunities in museums, be it management, curation, conservation, digitization, photography, etc. We have both Hindi and English versions of the graphic novel for you. The Directory of Museums in India is another unique component of the Expo, styled as the Yellow Pages for the museums in India. This directory provides since. This is the government's first attempt at making data on museums in the country easily accessible to the public, with a push towards making museums living spaces of a static collection.
We now have the illustrated museum cards to complement the directory of Indian museums and also popularize these repositories of history and culture. These cards for ready reference have also been designed. Each set consists of 52 cards and has been illustrated by hand with museum facades of iconic museums from India. This initiative is another way to introduce Indian museums to audiences at home and abroad, highlighting the vast number of cultural institutions. Each card has brief information about a particular museum, acting not only as an informal educational tool, but also as a keepsake souvenir. Prime Minister, sir, we now have a component of the expo that draws inspiration from a personal endeavor of yours, the redevelopment of the Kartavya Path in central Delhi. Friends, you may recall that the revamped Central Vista was thrown open to the public after the Prime Minister inaugurated it in September 2022. Renamed as Kartavya Path, the arterial road that extends from the Rashtrapati Bhavan to the India Gate is one of the most iconic places in the national capital. This refurbished public plaza art and cultural performances to the public, thus democratizing the public plaza. The pocket map of Kartavya Path, which the Honorable Prime Minister has launched today, is a small attempt to highlight the various state houses, cultural spaces, and the Ministry of Culture institutions along the iconic path. Thank you, Mr. Prime Minister, sir, for launching all those elements for us. Ladies and gentlemen, we have with us today the Director of the Louvre in Abu Dhabi, Mr. Manuel Rabate, a consummate museum professional. Namaste, Malver, bonjour, good morning. For those who need translation, thanks to my accent, you will be able to mix channel 1 and channel 2 at the same time, French and English. Your Excellencies, honorable delegates, ladies and gentlemen, Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, for your unwavering support and commitment to the development of art and culture sector. I want to thank my colleagues and friends from the Ministry of Culture of India, Shri G. Kishan Reddy, Mr. Govind Mohan, and Mrs. Mugdha Singha, that I had the pleasure to welcome in Abu Dhabi short while ago. For this moment, I would like to start with the profound wisdom of two visionary leaders. A particular example of this, if I may, is the Louvre Abu Dhabi in the United Arab Emirates, which opened a little more than 5 years ago. It is a testament to the extraordinary collaboration between Abu Dhabi and France. It is a new cultural beacon, bringing different cultures together to shine a fresh light on shared themes that reveal and connect humanity. This is the first universal museum in the Arab world, and it is guiding us in an intellectual and emotional journey through time and space, unveiling our shared connection on the essence of what it means to be human. India, a land known for its rich diversity, and the UAE, a nation which has more than 200 nationalities, share a profound connection in terms of transformation. These nations are in constant motion, propelled by the interplay of culture, the opportunity to learn from one another, to draw upon our experience, success, sometimes failures of the past. As India, with this expo, is contemplating the future of its museum system, the best of the biggest museum of the world, and something absolutely rooted in the capital city of this state. This kind of innovative relationship can help accelerate the transformation. Second model that I would like to share. The other part is what is developed and acquired in Abu Dhabi as a national collection. But we also have ambassadors objects from different countries, from Jordan. We believe that the museum have to work for the inclusivity of the social fabric. We have a few strategies that I would like to share.
we invite... And this matter will be discussed further with the French side on the sidelines of the Museum Expo to firm up the MOU. भारत देश जहां सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। इस संग्रहालय में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा। कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की नींव रखी, जिनके मार्गदर्शन में वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ, जिनके संरक्षण में ज्ञान विज्ञान की अतुल संपदा विकसित हो रहा है 1,17,000 वर्ग मीटर के विस्तार में। इस ऐतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लगभग 5,000 वर्ष पुरानी भारत की अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था? वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों का ज्ञान समाहित है। यही नहीं, ऋग्वेद में त्वचा रोग विशेषज्ञ विदुषी अपाला का वर्णन मिलता है। सुश्रुत की शल्य चिकित्सा, चरक के सिद्धांत और पतंजलि के अष्टांग योग की प्रासंगिकता हैरान करने वाली है। विश्वविद्यालयों का प्रश्न राजपूतों, मराठों और मुगल शासकों के ही युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तुशिल्प देखते हुए, होयसल, यादव, मराठा शासकों का इतिहास देखते हुए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं परिवर्तन के उस दौर की ओर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। पांचवें तक रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत काल से शताब्दी वर्ष की कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, मीनाक्षी लेखी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, लू म्यूजियम के निर्देशक मैनुअल दबाते जी, दुनिया के अलग अलग देशों से आए अतिथिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहां म्यूजियम वर्ल्ड के दिग्गज जुटे हुए। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जोड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। इतिहास के अलग अलग अध्याय हमें कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर आता है, सरकारी, गैर सरकारी,
लेकिन मैं कह सकता हूं कि मन पर प्रभाव पैदा करने वाला पूरा प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, और भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने हो नहीं पाए। लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस क्षति को और ज्यादा बढ़ा दिया, और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है, उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों संरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल म्यूजियम पर विशेष महत्व दिया है। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल Thank you very much, Honorable Prime Minister, sir. Ladies and gentlemen, we've come to the close of the inaugural session now. And I request you all to please remain in your place of left the venue. Please remain in your places. As the Honourable Prime Minister takes leave, seating arrangement on the dais, and we have a panel discussion.
number 15. Yay, 15.